different countries, different time zones, and different conditions prevailing during the lockdown, during this pandemic. So we extend a very hearty welcome to all our brothers and sisters from world over, and very special hearty welcome to all our dignitaries, those are joining us from Ministry of Education, Niti Aayog, and a couple of other prestigious organizations in our country, including AICTE, UGC, AIU, NIPA, NCRT, and National Council for Teacher Education. We extend you all a very hearty welcome. Now, ladies and gentlemen, this afternoon, as Indian Standard Time, that's about 33 minutes past 12 o'clock in India in the afternoon, we have got a very distinguished guest with us, Dr. Tulika Mehta, the founder director, Kaizen Systems, Complete IT Hub. We extend her a very hearty welcome this afternoon. Madam is going to share with us her vision with regard to the national new education policy in India, which has been announced on 29th of July. And one of the components what we are taking today and this afternoon is artificial intelligence and cyber security. Now, before I hand over to ma'am, let's share a couple of slides quickly so that those are watching this program for the first time today. We all are on the common frequency and we all understand what exactly is the purpose of this series, what are we working on to, what do we wish to achieve, and how are we achieving the sustainable development goal number 4, which is towards education, and sustainable development goal number 5, which is gender equality and women empowerment as far as United Nations and UNESCO is concerned. Our chamber, International Chamber for Service Industry since 1994, which is in the service of the non-resident Indians world over. We also have a deep linkages for the corporate in India as well as abroad. During this corona and during this lockdown, we are focusing on education. And right from 25th of March, when we started this journey, at present, we are putting in efforts from our chamber how to keep education relevant. And we are reaching out all the educators, teachers, principals, corporate trainers, and technocrats. And at the same time, various stakeholders, those are directly or indirectly associated with the education system in India as well as abroad. Basic aim is that how do we get connected so that there is not a digital divide, whatsoever best we can do from our side. During the lockdown, the thought processes are affected, business is affected, physical and mental health is affected, and main part of the universe, education is deeply affected. Ladies and gentlemen, India always believes in Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. We all are one. So let's collaborate with each other so that the world is at peace. Heartiest congratulations to the Prime Minister of India, Education Minister of India, all the stakeholders directly, indirectly associated with the education policy, new education policy and education ecosystem in India. Now, at this point of time, almost about 150 countries inputs which we got from world over. The next crisis and concern and difficulty is going to be on water sharing, water strategies, water conservation, everything whatsoever can come related to water. So जल संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है. आज के माहौल में अगर पानी की एक एक बूंद को बचाना इतना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे राज्य, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिन पर आज भी लोगों को दूर से पानी लेकर अपने घर तक अपनी व्यवस्था के लिए आना पड़ता है. Women empowerment is also very important to all of us, ladies and gentlemen. So let's focus on women empowerment as well. And over here, International Chamber for Service Industry always believes in कि जब आप किसी मेल मेंबर को पढ़ाते हैं तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप फीमेल चाइल्ड की एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं तो आप पूरी सोसाइटी का विकास कर रहे हैं. बिकॉज इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में शी इज हैविंग ए मल्टी लेयर रोल्स and she is going to carry this legacy forward to many subsequent generations. That's why
the mother's education, women education, sister education, all it's very, very important. Ladies and gentlemen, our chamber is in the service from morning 9 o'clock till evening 9 o'clock, 12 hours. We all are together every day. Should you wish to get any kind of a support, do let us know. We would be more than happy to support you. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 days we are for the youth. Youth collaborative, innovative, how education can be stimulating, rewarding, fun, gamification in education, music in education, number of things are being discussed Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And then on Friday evening, 5 to 6 p.m., every day we have got a program with you. शाम को 5 बजे से 6 बजे हम लोग रोज आना शाम को आपके साथ जुड़ते हैं. आज थर्सडे है तो आज यूथ के लिए प्रोग्राम है. कल फ्राइडे होगा तो कल शाम को 5 बजे से 6 बजे तक लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स क्या है, लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स का रेलेवेंस आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम शनिवार यानी कि सैटरडे को we discuss in the early evening 5 to 5:45 what is Vivekananda's Vedanta, where basically the relevance with the education system and the youth of the country. Then comes Sunday morning, we take you all the way to Woodbury University, California, Burbank, Los Angeles, where from Professor Satyendra Dhiman discusses with us what is the relevance of Srimad Bhagavad Gita and 10 main principal Upanishads. वैसे तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन उनमें से जो 10 मेन उपनिषद हैं जिनके बारे में आदि शंकराचार्य ने बहुत बातचीत की है और उनका मनन किया है, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और उस सब का रेलेवेंस आज के एजुकेशन सिस्टम्स के साथ क्या है उसकी बातचीत. शाम को 3 बजे रविवार को संडे इवनिंग वी हैव गॉट इंडिया आसियान जॉइंट कोलैबोरेशन, education, skills, tourism, research, innovation, wellness, micro, small and medium enterprise. और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री भारत के जो कहते हैं अष्ट लक्ष्मी, जो 8 भारत की नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स हैं, उन पर हम लोग फोकस करते हैं. और उसके बाद आता है रविवार यानी कि संडे इवनिंग का आखिरी प्रोग्राम, जहाँ पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की बातचीत होती है. आजकल हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कर्नल अनिल कुमार पोखरियाल जी के साथ मिलकर इनकी जो मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल है उसके साथ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत सारा कार्यक्रम कर रहे हैं. सैटरडे इवनिंग को एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए रहता है आयुर्वेदा का, दैट इज योर योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक, इन सब का हमारे जीवन की रोजमर्रा के जीने के साथ क्या डायरेक्ट संबंध है और आयुर्वेदा किस तरीके से पूरे विश्व की इस समय कोरोना में मदद कर रहा है. तो ये आपका पूरा कैनवस है पूरे हफ्ते का, यदि आप देखते हैं तो यू गेट द कंप्लीट आइडिया. एंड उसके बाद हमें जो 150 कंट्रीज की रिसर्च की हमने कंपाइलेशन की है, डिटेल भी इकट्ठी की है, तो इन लोगों का कहना क्या है और बेसिकली इस रिसर्च के माध्यम से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम पहले कहते थे उसको अब कहेंगे बैक टू बेसिक्स ऑफ लाइफ. पहले आपके भोजन की व्यवस्था, फिर आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था और फिर आपकी शिक्षा प्रणाली की. सो अर्न एंड लर्न. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मेक एजुकेशन रेलेवेंट, लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स मूव अहेड इन दिस जर्नी टुगेदर. आज के दोपहर we extend a very hearty welcome to Madam Dr. Tulika Mehta, the founder, director, Kaizen system, complete IT hub. She's an international marketing and strategy development head, Cube Global Brokers Limited. Now partner at Envolve, India's first mobile app-based company founded by engineers and IIM grads. Founder member of NIVEDITA, an initiative to work for the social welfare of women in Government of India, Government of Punjab. She has also received several prestigious awards at regional and national level for her contribution in education, skill development, and information technology. She is a young entrepreneur working extensively on IT platforms, new pedagogies, skill development,
and innovative career planning path, employment generation and entrepreneurship, and youth promotion platform through global summits and conferences. With these words, ladies and gentlemen, we extend a very hearty welcome to Dr. Tulika Mehta. Thank you, sir. Just go Thank ahead you. with this. Please go ahead. First of all, good afternoon to one and all, and thank you, Dr. Gulshan, for creating such a big initiative to connect the dots and creating an awakening effort for the individuals, startups, research teams, universities, and other educational systems. Thank you. Thank you so much. Our topic for today for discussion is on the new age technologies, that is artificial intelligence and cybersecurity. We have recently been introduced to the new education policy, and in connect to that, we have discussed few things, and we have also, made a wide scope that how are these technologies beneficial to the students and individuals. What is the future of these technologies? I'll be sharing my screen. Haji ma'am, it has come. It has come. You can increase the size, ma'am, from, yeah, great, wonderful. Basically, if we talk about technology, every day there's innovation in education, and we have to, combat these things, and we have to come at the pace to fight all these old pedagogies and learn the new age technologies. The one which is very much in, you can say, very much we are using these days is artificial intelligence. If I talk about the future, the key points which we have picked from education policy, it has been very clearly mentioned. I've what I've done is I've shared few points from the policy which are combat to the new age technologies, that how these things can be combined, and how are the students or the startups or the individuals they can benefit themselves. Sure, ma'am, sure. So basically, if I have a look at the new age education policy, we understand the fact that there is a shift, and that there is a more focus on competency based learning, critical thinking, holistic and discovery based education. There is more there is more stress which is being laid on is research based education. Uh, all the education centers, colleges, universities, they are likely to focus on the projects, like project based clubs, like maybe a club can be based on a new, you can say, a new project. The students can be brought together and they can work on the new projects based on the technology, that is AI, or maybe they can come back the features of cyber, they take into consideration the threats of cybersecurity, cyber attacks, and they can create a new project taking the help of cybersecurity. So these all kind of projects will be supported at school levels, district levels, and beyond, as per the policy. It is also envisioned that over a period of time, the existing centers, they will be evolved into research intensive universities and teaching universities. So the prime focus will remain from syllabus or module based learning to the skill development, wherein the student or the child from the very small age will be focused on the skill what is being taught to the child, instead of the old system wherein you are in class 1, 2, 3, 9, 10th, and so on. The focus will be what have you learned. Like this is in parallel to your Atmanirbhar Bharat skill development, which has been introduced by our honorable prime minister uh, 4 years back also, 4 5 years back also. The skill needs to be developed, and this thing has been brought in the policy also, that all the focus will be on the research and skill development from the school level. If we talk about the autonomous bodies, that is your NEET,
they will be creating a common platform for technology wherein all the schools, universities, they can take the solutions of various education technologies. If I talk in details about the the NEET platform will be the learning platform which will be totally working on artificial intelligence. This will have all the features wherein you can manage the entire coursework, entire attendance, entire e-learning content. Everything will be combined in this particular portal, and the advantages of this portal can be can be taken by the various educational softwares will be developed and made available for the students and teachers at all levels. Teaching, learning, e-content will continue to be developed by the states in all regional languages, whether it is NCRT, CBSE, NIOS, and other bodies. All this will be uploaded on the National Teachers Portal. So basically, there's a prime focus on this particular portal by the name National Teachers Portal. This portal will be functional on the basis of artificial intelligence. It is not the thing that there will be no human interference, or probably this particular portal will have no breach. However, it will make the education system convenient, handy, and everybody can exercise whatever is needed, whether it is syllabi or grading system, or student needs any content. All these things will be available on a single portal. If I take this thing further and extend that how artificial intelligence and educational policy is being merged, or you can say they are brought together at a single platform. Let me first of all talk about what is AI, what is artificial intelligence basically. Because I have, named the word couple of times and I have not briefed about this. So basically, artificial intelligence is kind of a technology wherein we create the modules, we create the protocols and the programs, and the computer is designed to work as good as human. So it is the efficiency of the system, that how efficient the system is. The more efficient the system, the more you can say it is good with the technology. So basically there are the training algorithms which are created, and these algorithms are fed into the system, whether it is robo or any software or anything. That is basically the concept of artificial intelligence, whereas we do not require much of human interference in the system to operate for that particular software or system. So if we talk about this, artificial intelligence has brought a great amount of transformation in the educational sector. And COVID is a curse and blessing both. Blessing because of this particular COVID situations, we have learned so many things, and we have understood the use of this particular technology, how we can operate our systems from through online mode, how we can take the maximum use of the technologies which the other countries have been taking for a couple of years, and we being in India, we were not taking that much use or that of these particular technologies. Now this COVID has made a powerful impact on each one of lives, whether it is a student or any education organization, and each one of us have understood that how the gap can be can be bridged between academics, organization, or any system, or probably a student. We have understood very clearly that if we have internet with us,
and we have a computer system. We can virtually attend the classes. We can we can understand the charm of artificial intelligence in education through this particular thing. So this is the very first example which we ourselves are understanding in our day-to-day life for the past 6 months, that how the transformation has been brought with the help of artificial intelligence in the education system, whether it is at the school level, wherein students from the junior class, say from the grade 1, they are doing online classes. Initial few months it was a little difficult for the parents, students. There were a lot of negotiations. But if I talk today, everybody is way comfortable, and they've understood that this mode of education is more effective. Let's not talk about the kind of factors wherein the student or the learner is away from the faculty and not able to, not emotionally connected, not able to see the expressions. Apart from that particular aspect, we understand that the hindrance to the education system has been combated by this particular thing, how this artificial intelligence has itself taken the space and filled the gaps of education in everybody's lives. Apart from India, if we see, I mean, this is the revenue sheet. If I talk about the technology, artificial intelligence, and we see revenue in million US dollars. I mean, this is the chart which has been, shared, and it has been marked in this that from 2016 to 2025, how many US million dollars can be, revenue can be generated through this particular mode of education or business or whatever. See, artificial intelligence is a methodology, or you can say a technology, which has taken its space, whether it is education, whether it is any FMCG sector, whether it is any sector, every sector, this particular technology has taken its space. Our topic for discussion is basically about the future scope of this particular sector. Maybe if I talk about the career scope, or maybe how this particular sector is taking space in our new education systems, or as per the new education systems, what has been drafted, that what will a child learn at the school level, what will the child learn at the senior secondary level, or what will kind of education should be imparted to the students in the UG and PG courses. This has a prime focus on the revenue, that which technology is going to bring the maximum revenue in coming years. If we focus on the maximum revenue, that will be on the challenges which we are facing today. If I'm facing the challenge in cyber attacks, or say this pandemic has created some kind of situations in each one of our lives wherein this technology has taken space, it clearly makes us understand that what is the future, that what is the career scope, and which technology is going to take the maximum space in the, you can say, economy or the market. If we see the statistics, we clearly understand that by the end of 2021, there is 7,714 US million dollars. This much revenue is projected to be created from this particular technology. It is not here I'm not talking about online education, or probably schools are taking the online education through the methodology being used, that is AI. I'm talking on looking forward to this particular chart. I'm talking on the ground that if few months back, when we were scrolling our WhatsApps, or when we were looking into the videos, we have learned, or we have seen about driverless cars. That is AI. We have heard about Sophia, the first human robot. We have talked about, we have seen about
We know social media has taken so much of space in our lives, and introduction of chatbots in those particular systems is one of the methodology wherein revenue is being generated, or how the GDP is being created. So these are the aspects, or these are the things you can say. Let me talk about one these things one by one. So if I talk about social media, it means I am talking about uh, everything. I'm talking about Facebook, I'm talking about Instagram, I'm talking about Twitter, I'm talking about this um, LinkedIn, or any such kind of platform. Any particular business, any education center, any university, any school, any FMCG sector company, or any mechanical company, everybody is having their online classes. How will they bring their businesses on their tables through online? That is the story. We had been doing it through websites, through forecasting, through manually texting, through manually posting on social media, all these things which we have been doing for a certain amount of time. If I talk about AI, that is artificial intelligence, I'm not available on my website on all the time, or probably even if I have a call center 24/7 assistance, there could be some kind of scope wherein 24/7 accessibility will not be there. There comes the role of a chatbot, wherein you integrate a automated self-trained mechanism in your website, or wherein what when I have logged into the website, what kind of questions, or what kind of thing, what would be the purpose of visiting that particular portal. So that kind of training algorithm will be generated and introduced in that chatbot system. That technology is your artificial intelligence. If each one of you must have seen, this is very frequently seen these days on Zomato and Swiggy. Hi, how can I help you? What do you need to order? Then they share the menu card and all those things. So that is the self-answering system. Then, if I talk about other things like your driverless cars, we have seen videos wherein there are cars which are moving without the driver, or we had been looking at those videos, and we were thinking that yes, this is an animated kind of a system, just for looking into it. But now these things are on the verge of execution on the basis of artificial intelligence. There will be a training algorithm which will be introduced in that particular car or mechanism, that where the car has to stop, which will be affecting, I mean, some sounds. Say if any car is passing next to the car, which is a driverless car, it'll create some kind of vibrations, some kind of sound, some kind, if it is a night, some kind of light. So all these things can be taken into consideration, and the training algorithm can be trained for that particular car, and that can be executed again with the help of artificial intelligence. So this is the need of the hour, and this has the future scope for next 5 to 10 years. If I talk about future scope, I talk about the basis of new education policy. If I talk about the future scope, I talk about the career aspects in context to this particular technology. So if we have the students in our system, or you can say the researchers who are doing research, or any universities who are looking to teach small courses, or say, you can say, professional degrees in the particular skill, in that what can be taken into consideration is these technologies which have a wide scope. So there can be a small curriculum, or in our integrated courses in our graduation, say, or post graduation, wherein we can focus on artificial intelligence and cyber security. I'll be coming on to the cyber security.
if we have, I've already listed that, impact of COVID-19 on teaching. It has, yes, it has affected. Initial days, it was very difficult for the students, schools, individuals to probably understand and, uh, attend the classes and match themselves with the ongoing pace of the globe. That how a teacher can professionally teach through uh, online system, or how a student can absorb the same thing on at the same pace while the teacher is teaching. We have already combated these particular limitations which we were facing few months back. So all these things which were a curse to us in the form of COVID, uh, we have taken this as a challenge and accepted it very gracefully, and introduced all these things in our education system, in our uh, businesses, or in any systems. Now people will understand, if there is any business uh, system, probably in most of the sectors, they will understand that how the things can be operated from online. If I talk about generating business, wherein people were generating business through rural strategies of marketing, wherein they were engaging the marketing people and they were going for the marketing, that has been shifted to the geographical assessment through AI. We will geographically access the area through the social media platforms, whether it is your, you can say, Facebook or Google Ads. We will understand, we will sense the nature of the market at that particular area. We will use the tools using the updated technologies, and we will only reach the kind of customer which is looking for that particular product. So that is need based advertisements also, which has saved on the money, which has helped in targeting the relevant customers. Wherein earlier, what we used to do, we used to put the ads in the newspapers. Half of the people used to read, half it was being missed, and it was a huge cost. Again, this particular thing also we have understood through COVID, or you can say through online or through AI. People have taken, a step back from the rural newspapers or any such mode of advertisement, wherein it was complete ban to accept the couriers or newspapers. So this is the only thing which has served blessing, and we have understood that how these things can be helpful to us in the development, and how the same can be resourceful. So all the global needs has been scaled, sensing the nature and the need of the customer or the student or the exhibitor, and the same has been combated by the new age technologies. If I stick to the basic concept, uh, and I think that some of the people in the education sector will not be more happy with the artificial intelligence. They some people, कुछ के मन में ऐसा डर है कि अगर AI ही आ जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, या फिर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग एल्गोरिदम से ही बच्चा पढ़ पाएगा या समझ पाएगा, तो टीचर की क्या आवश्यकता रहेगी। ऐसा नहीं है। एक बहुत सुंदर सी बात है, इट्स वेरी गुड थिंग। टेक्नोलॉजी विल नॉट replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. So this thing needs to be understood that technology को हमने ही बनाया है, हमें वो एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, अगर वो सही इंसान के या सही टीचर के हाथ में रहेगी, तो उसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जाएगा, और एक स्टूडेंट का भविष्य बहुत अच्छे तरीके से हम बना पाएंगे। कीपिंग इन व्यू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हम लोग ये चीज समझ पाएंगे कि आज की तारीख में हमारी जरूरत क्या है, हमारी मार्केट की जरूरत क्या है, हमारी इकोनॉमी की जरूरत क्या है, हमारे देश का जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा, जहां से हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, या फिर जहां जो चीज जो सेक्टर हमारी इकोनॉमी को
अपग्रेड कर रहा है या जीडीपी को बढ़ा रहा है, आने वाले समय में उसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में जॉब्स रहेंगी। या तो हम आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर पाएंगे, स्किल क्रिएट कर पाएंगे, या फिर हम कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएंगे जो लोग इस स्किल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ हैंड ऑन हैंड ज्वाइन करके। सो अगर हम फ्यूचर में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बात करें और उसके फ्यूचर की बात करें कि ये रिप्लेस नहीं करेगा, मशीन इंटेलिजेंस है, ट्यूटरिंग में हेल्प करेगी कि आपके स्टूडेंट का 100% समय बच पाएगा, जो कि शायद अगर मैं टीचर हूं और मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, मेरी क्लास 30 स्टूडेंट्स की है, तो मैं 30 के 30 बच्चों को 100% समय नहीं दे सकती। मेरा समय जो है 30 बच्चों में बट जाएगा। लेकिन अगर हम इस मोड से एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर सकता है और वो अपने टीचर का एहसास पूरे 100% समय में कर पाएगा। तो दिस इज अ गुड थिंग कि ट्यूटरिंग वाली चीज जो है 100% एक स्टूडेंट फील कर सकता है। हर स्टूडेंट नहीं अब्सॉर्ब कर सकता एक क्लास में सारी चीजें। एक 30 बच्चों की क्लास में आप जितना डिलीवर कर पाते हैं, कुछ को नहीं समझ में आता बिल्कुल भी, और कुछ को शायद 80% समझ आ जाता है, कुछ को 90 एंड सो ऑन। अगर यही चीज इस मेथोडोलॉजी से डिलीवर हो रही है तो हम इस चीज को इससे कॉम्बैट कर देंगे। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा स्टूडेंट्स का ग्रेड करना, जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स को इस चीज की दिक्कत आज तक रही है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, ये क्लैरिकल वर्क है, हम तो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हमारा टाइम मेंटरिंग में जाना चाहिए, हम ये बेसिक काम कर रहे हैं, दिस इज वेस्टिंग आवर टाइम। ये चीज इसके साथ हल हो जाती है कि आप अपने रिसर्च पे फोकस कीजिए, पेडोलॉजी पे फोकस कीजिए, कैसे पढ़ाना है, क्या न्यू मेथड यूज किए जाए, क्या न्यू टेक्निक्स यूज किए जाए, और उस ग्रेडिंग प्रोसेस को जो हम ऑटोमेट कर देते हैं और उसको हम एआई सिस्टम में डाल देते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर एलिमिनेशन एंड ट्यूटरिंग। दिस इज आल्सो वन थिंग व्हिच कैन बी रिजॉल्व्ड विदाउट following the line of trial and error. The try error, and this can be combated with this particular thing. Next most important thing is virtual reality. अब इस चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं इस समय, दैट इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अगर हम अपने स्टूडेंट को कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उसको ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाके पढ़ा सकते हैं। लेट मी गिव यू वन वेरी स्मॉल एग्जांपल दैट एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट नेचर। हर पढ़ने वाले की बहुत अलग नेचर। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि ये इंजीनियर था और मॉडल बन गया। सुशांत सिंह राजपूत बहुत हाइप हो रहा है आजकल, बहुत स्ट्रीमिंग है। एजुकेशन से क्या है, वो क्या था, वो he was an engineer, he studied non-medical and he jumped to acting profession. So many other examples wherein students study something else and they in their careers they accept different particular lines. ऐसा क्यों होता है? हर स्टूडेंट की नेचर अलग होती है, हर स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर हम उस स्टूडेंट को वो चीज, वो डिलीवरी मॉड्यूल उस तरीके से दें जिस तरीके से वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, तो उसको वो चीज से प्यार हो जाता है। he starts loving that particular thing and absorbs very nicely. Let me give you example. For example, मैं एक नेचरिस्टिक स्टूडेंट हूँ। मेरा जो नेचर है पढ़ने का, एज पर द डीप लर्निंग एल्गोरिदम, मैं नेचरिस्टिक। हर किसी के 8 से 10 टाइप्स होते हैं, नेचरिस्टिक है, काइनेस्टिक है, मैकेनिकल है एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नेचरिस्टिक कैंडिडेट हूँ और मुझे लेकिन पढ़ना इस समय से इंजीनियर मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग, अगर मैं बंद कमरे में बैठ के पढ़ रही हूँ मैथमेटिक्स, एक तो मुझे पहले ही पसंद नहीं है, मेरी नेचर ही अलग है, और दूसरा मुझे एनवायरनमेंट भी वैसा नहीं मिल रहा, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को उतना अच्छे से ग्रास्प भी नहीं कर पाऊंगी, शायद ना ही कर पाऊँ, या मैं बहुत मजबूरी में कर रही हूँ जस्ट फॉर माई ग्रेड्स। तो इस चीज को हम कंबैट करते हैं वर्चुअल रियलिटी लर्निंग के साथ। मेरा नेचर जो है
नेचरिस्टिक है, मैं हर बार पार्क में बैठ के या गार्डन में बैठ के इन्वायरमेंट को देख के मैथमेटिक्स पढ़ पाऊं, या हर बार पॉसिबल नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर हम वर्चुअल रियलिटी मेथोडोलॉजी के साथ डिलीवरी कर रहे हैं तो यह हर समय पॉसिबल हो सकता है। आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस जगह पे, जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह के आप हैं, उस तरह से आप उस चीज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। विजुअलिस्टिक है तो आप देख के पढ़ पाएंगे, आपको वीडियोस से ज्यादा अच्छा समझ आएगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग और listening. So everybody has a different nature of learning, and this is also resolved by the virtual reality learning, where virtual reality is a one part of the artificial intelligence. अब हम जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, हमने बहुत क्लियरली एक चीज मेंशन की, साइबर सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो हम खूब बात कर लिए, लेकिन व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी is something to protect your system, to protect, it is basically a information security system. So cyber security can be put into the lines that our systems can be saved from various phishing attacks or any malicious codes through this particular methodology. अब ये तो हैंड इन हैंड चलेगा, वैसे एआई सिस्टम है, एआई सिस्टम में तो इसका रियल टाइम बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। हमारा कोई भी ट्रेंड एल्गोरिदम है, हम चाहेंगे कि इस ट्रेंड एल्गोरिदम में कोई वायरस ना आ जाए। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाया जाए तो हम देखते हैं हमारे ईमेल्स पे कुछ स्पैम्स आते रहते हैं, जिनको हम गलती से डाउनलोड कर लेते हैं। जब हम उनको गलती से डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे सिस्टम्स में वायरस आ जाता है। उस वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टर्म है वो है साइबर सिक्योरिटी। वो चाहे आपका ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑनलाइन यूज कर रहे हो या फिर ऑफलाइन यूज कर रहे हो, कोई भी आपका सिस्टम है उसको आपने बचाना है किसी भी फिशिंग अटैक से, तो साइबर सिक्योरिटी is something which needs to be taken care of. तो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संपर्क में, तो हमें ये चीज मालूम लगेगी इसका एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी का एआई के साथ कहाँ है। मैंने इसको मर्ज इसलिए किया है क्योंकि मैं दो चीजें बताना चाहती हूँ इसके माध्यम से। ये कि आने वाले समय में ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी, हमने बहुत सुना सैप, हमने बहुत सुना जावा, हमने बहुत सुना हडूप, ये सब चीजें हम टेक्नोलॉजी सुनते रहे, अंडरस्टैंड करते रहे। लेकिन अब जो टाइम आ गया ना, इन टेक्नोलॉजीज को अलग अलग लेके यूज करने का नहीं है। इन टेक्नोलॉजीज को मर्ज यानी कि कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सारे डॉट्स रह गए, पाइथन डॉट रह गया, मशीन लर्निंग एक डॉट रह गया, जावा एक डॉट है, इन सब डॉट्स को या फिर हडूप एक डॉट है, इन सब डॉट्स को कंपाइल करा और हमने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो बात होगी आज के बाद एआई की फॉर्म में होगी, और अब इस एआई को खराब होने से बचाना है, सिस्टम को हमने पेरिश नहीं करना, हमने कहीं से भी खराब नहीं करना। तो कौन बचाएगा इसको? वो है साइबर सिक्योरिटी मेथड। तो दो जॉब्स तो पक्की हो गई हमारे सिस्टम में, आने वाले सिस्टम में, फ्यूचर जिनका फिक्स्ड है, आने वाले 10 साल, 7 से 8 साल कहीं नहीं गई है टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत, साइबर सिक्योरिटी बहुत ही वास्ट फील्ड है। अगर हम इसमें एआई के साथ हम बात करें ना, तो हमारे स्पैम्स को बचाता है। कोई भी नेटवर्क है उसमें कोई इंट्रूजन ना आ जाए, वो उसको डिटेक्ट करना, कोई फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, बॉटनेट या चैटबॉट्स है ना, तो बॉटनेट डिटेक्शन, सिक्योर यूजर ऑथेंटिकेशन, साइबर सिक्योरिटी रेटिंग, हैकिंग, इंसिडेंट फोरकास्टिंग। I'll come to one more very beautiful thing which we have seen in this 2020 only. So this is cyber attack, data breach.
This is something I was about to talk about. Security breach, data breach, cyber attack. कौन बचाएगा? साइबर सिक्योरिटी. रीसेंट केसेस जो हमें पता है, अभी रीसेंट हुए, जुलाई में हुआ हमारा बिटकॉइन स्कैम. बहुत सारे हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हैक हुए. फिर आपके मालवेयर आए, न्यू एज वेपनरी में. आपका सिक्योर कोड रिव्यू हुआ, ये भी जुलाई में. और नोटोरियस मालवेयर अटैक्स जो कि अक्सर होते रहते हैं, जून में हुआ. ये बिगेस्ट ट्विटर ब्रीच अकाउंट्स, आई थिंक ये तो हम सबको पता होगा. ऑल द टॉप नॉच पर्सनालिटीज, उनके अकाउंट्स हैक हो गए. ट्विटर का अकाउंट हैक हो गया यूएस के हाई प्रोफाइल लोगों का. कैसे हो गया? breach, data breach. It is because of the data breach. It is because this thing was realized later on. ऐसा नहीं है कि ट्विटर के पास ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, या ट्विटर ने ऐसा कोई मेथोडोलॉजी क्रिएट नहीं किया होगा जिस वजह से हैकर ने उसको हैक कर दिया. इसका रीजन ये है कि जब हमने ये सिस्टम बनाया, हमने इसका एंटीनोड बाद में बनाया. अगर हम सिस्टम बनाते ही इसके साथ ऐसे लेवल 1 पे ही ये चीजें, लाइक जिसे कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन किसी का हो रहा है, इंट्रूड हो रहा है कोई मलेशियस नोड, हम उसी लेवल पे उसको काउंटर कर लेते हैं. वो चीज इस सिस्टम में नहीं थी, इसलिए ये साइबर अटैक्स हो गए और ये स्कैम्स हम सबके सामने आए. तो अगर हम बात करें आपके फ्यूचर ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजीज की, कोई भी सेक्टर है, हेल्थ केयर है, ई कॉमर्स है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि आज की डेट में अनटच्ड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जीडीपी हम लोग क्रिएट करने का देख प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो मैंने आपको अभी बताया. और इसी के साथ साथ जो नासकॉम की प्रोडिक्शंस हैं इंडिया के बारे में, कि ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो दे रहे हैं कि इट इज द साइबर सिक्योरिटी इज likely to create close to 3 million jobs globally for the cyber security professionals. And what will be the role of cyber security professionals? It will be to understand the concepts of ethical hacking at level 1, and whenever a new program, or you can say a system, is being formed, such kind of multi-layer securities are being introduced in those particular systems, such that once that is passed, only then you can log in. It is not that user ID and then password. It is then we have to create layers and layers of such particular levels, wherein we will be able to understand the footsteps of these particular cyber security threats which keep coming to us. We have seen a lot of bank frauds, a lot of online money fraud, money laundering. We have seen that is all through the cyber crimes. And what we need to do is through cyber security. Just for the precaution, I would like to mention one thing. जब हम अपने बैंक अकाउंट्स के साथ डील करते हैं, तो अक्सर हमें क्या आदत होती है, जो ईमेल आईडी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना, हम अपने बैंक में वही आईडी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा मेल आईडी है abc@gmail.com. तो अब मैं abc@gmail.com सबसे ज्यादा यूज करती हूँ. मेरी आदत यही रहेगी, मैं यही मेल आईडी और यही फोन नंबर मैं सभी बैंक्स में ये दे दूं. लेकिन इस चीज को शायद कभी कोई ज्यादा नहीं बताता है. इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना रहता है कि हमारा मोस्ट रेगुलर यूज होने वाला ईमेल हमारे बैंकिंग वाले ईमेल वाला नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर मेरा बैंकिंग वाला ईमेल cdf@gmail.com है ना, तो मैं अपना इसको रेगुलरली यूज नहीं करूंगी, इसको इसी पर्पस के लिए रहने दूंगी. हाउएवर, जो मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ उसमें ये वाले हमारे मेल्स, बैंकिंग की स्टेटमेंट्स और ये चीजें ना ही है. यानी ऑल दी सिक्योरिटी मेजर्स नीड्स टू बी टेकन. ये है आपका साइबर सिक्योरिटी का पहला मेजर.
साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि हमने कोई फॉर्मुलेशन डाल दी, हाँ हमने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए और वो डाल दिए। अगर वो ब्रीच होता है तो हमें लेवल 1 पे ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, और हम उस चीज को खराब होने से पहले सही कर लेते हैं। यानी कि कोई मालवेयर आया, कोई मलेशियस नोड आई, वो पूरा क्रैश कर दे सिस्टम, ये नौबत ना आए। कोई मलेशियस नोड आने वाली है, उसका एक पार्ट आ गया है, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर देना पहले लेवल पे। दैट इज द मेजर यूज ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी। So we have discussed about new age technologies. We have discussed about artificial intelligence, future scope of AI and cyber security, and how the GDP can be increased with these particular kind of technologies, and how our students, researchers, and all the people working in these domains, they can be benefited. So one thing I would just like to mention, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है। एक कहानी मैं सुनाती हूँ, बहुत अच्छी है, ज्यादा इसके पैटर्न पे नहीं है, बट हाँ एक कहानी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक जंगल में ना आग लग जाती है। एक छोटी सी चिड़िया होती है और वहाँ पानी पड़ा होता है साइड पे, वो अपनी चोंच में पानी लेती है और वो आग के पास जाती है और उसे बुझाती है। एक बार एक बंदा बैठा होता है, वो देखता है कि ये चिड़िया कर क्या रही है, व्हाट इज शी डूइंग, चोंच में पानी ले रही है, वहां गिरा के आ रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन। वो उसे रहा नहीं जाता, वो चिड़िया को बुलाता है और पूछता है, चिड़िया तुम क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है तुम इतनी छोटी सी चोंच में पानी भर रही हो और वो इतनी बड़े जंगल में आग लगी है, तुम वहां उसे जाके बुझाए जा रही हो, उससे बुझ जाएगी, वो तुम्हारे पानी गिराने से वो आग बुझ जाएगी। चिड़िया बोलती है, मैं चोंच में पानी लेके जा रही हूँ, वहां जाके गिरा रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरे ऐसा करने से जंगल की आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब इस विषय का डिस्कशन होगा कुछ समय बाद, ये ये टॉपिक उठेगा, ये मुद्दा उठेगा, तो जो मेरा नाम है ना, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो ऑन द सेम लाइंस की ये टेक्नोलॉजी है, हम लोग थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट करते रहें, सीखते रहें इससे, और इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान देते रहें, तो हम भी कुछ पार्ट, कुछ कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। न्यू एज पॉलिसी के संपर्क में काम करने वाले लोग, कि हमारे लिए जो पॉलिसी डिवाइस की गई है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हाँ हम आत्मनिर्भर हो गए तो हमने कंट्रीब्यूट कर दिया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट कर ली, तो हमने वी हैव डन आवर पार्ट। So we should be that part of the masses wherein we are contributing towards the new age technologies and understanding that what is the need of the hour. So that is all from my side. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much, ma'am. And ladies and gentlemen, Madam is sharing her email ID also and her cell number also. Those are watching from overseas, you got to add +91, because to reach out India, you got to add +91, and then accordingly you can reach her, you can contact her, and let's take our journey forward. It was wonderful, and for me particularly, the most important part was she assured that in the coming times, particularly in artificial intelligence and cyber security, there are going to be a lot of jobs, because loss of something is a gain of something. When you find that you're losing jobs somewhere, but at the same time you're going to get the jobs elsewhere, so that I personally feel that it's going to be wonderful for all of us. So thank you very much, ma'am. It was Thank you. wonderful. Thank you. You shared your vision so nicely, and people those are from the different places watching this particular program, in, instead of or in spite of your different languages and different barriers and all that, she had made a wonderful PPT so that you all could have the best of assimilation, and you could perceive, you could conceive, and you could get it the best possible way what exactly the technology is going to bring, the changes, the revolution in the coming times.
So thank you very much, Dr. Tulika Mehta, ma'am. We Thank are you, sir. grateful to you. Thank you. Thanks for coming and Thank thanks you. for sharing your vision. Thanks for sharing your expertise. We look forward to many more such occasions with you in near future.